Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, Meera ma'am. ji. Good afternoon, Good Kirti. afternoon. Today first we are going to take paper 2, that is for yoga, and at 3:30 paper 1 will be there. So those who are not from yoga background, you may join at 3:30, that is for paper 1. If you wish, you can stay for the yoga also. Okay, and now those who can, you can keep your video on just for better communication. For me, I should feel there are people to whom I am talking, not with the device only. Hello Neela ji, namaste. Hello Kirti, hello Jutsa ji. Hari Om. Hari Om, Hari Om. Okay, now let's begin. See, this is demo session, but I will try ki, there should be interaction also in between. Then only it will be little fruitful, or we can say it is more like you are also like putting your effort also, and you are connected with the session. Otherwise, I won't know ki whether you are connected or not. So I request other people, if you are not speaking, so please keep your video mute, audio mute, and you can keep video on, but audio mute. Okay. So yes, Josna ji, yeah, you can speak. Just unmute yourself. Unmute yourself. If I keep my video on, the voice doesn't come clearly. So if it is very unclear, I will switch off my video. No problem, no problem. Yeah. Thank you. Okay, so let's begin The with same three with me. Omkar chanting. Yeah, no problem, ma'am. No problem. As per your convenience, you can keep your video on and The off. bandwidth gets low Huh. if I keep the video on. Okay, okay, fine. Okay, so let's begin with three Omkar chanting. Everyone, please settle down wherever you are sitting, on the chair, on the floor. Sit comfortably. Keep your back straight, eyes closed. Let's begin with three Omkar chanting. Inhale. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Now gently open your eyes. So today we are doing paper 2 first, that is for yoga subjects. So what is the topic I'm going to take you? And here everybody is comfortable with mix Hindi and English, or anybody wants only Hindi, just raise your hand. If you are comfortable with both, then we can go with both the languages mix. So first I am going to share you what the topic I'm going to take from the syllabus. Just I'm sharing PPT.
It's not showing only 1 minute. Now, can you all see? Okay. See, this is the what I'm going to take. See, I have only half an hour, so I will only complete this unit 1. I'm taking fundamentals of yoga, history and various schools of yoga. So in that only I will try to cover this topic, history and development of yoga, meaning and definitions, and if possible, misconception, aim and objectives of yoga. Okay. So how many of you knows about since like how old the yoga is? Like what do you think? Maybe you have read from some book or from some text, like how many years old the yoga is. Your any opinion or you know anything? You can just unmute and ask, speak about that. Ma'am, yoga is Kirti? supposed to be around 5,000 years old. The first Fine. documentation was about, they found even in Indus Valley civilization, the recorded trans. Good, good, Kirti. That means your MA is going very well. You answered so precisely. That's very nice, very nice. This is kind of answer you should know for the NET exam. Okay. So welcome to you all for Arambha Yoga Institute on the demo lecture. Okay, I am Sushma Maurya. And today I'm taking unit 1, fundamentals of yoga, history and various schools of yoga. In that, history and development of yoga, meaning and definitions, misconception, aim and objectives. So here we'll see how old the yoga is, just I asked you. So some people says it is 5,000 years back because we have that we have found the text as a proof. But yoga is before that also, because it is not the same time it is written and that same time it was appear. Okay, maybe it was more older than that. Maybe you can say 10,000 years back. So few people says it is 5,000, few says it is 10,000. But because we have found the proof, that is why we consider it is a 5,000 years back. Now, who has given the yoga? Like who was the first or who has started the yoga? So it is like Adi Yogi or Shiva is considered the founder of yoga. He was the first person who founded the yoga. And now here the division of yoga has given like pre-classical, classical and post-classical period. Okay, so what is pre-classical period? The yoga which we found in the Upanishads, in the Veda, that is pre-classical period. And classical period is the yoga which we found in like Maharshi Patanjali, that is around 500 BC. And post-classical yoga is the yoga which we found from the Maharshi Patanjali, after the Maharshi Patanjali until now. Like in that mostly the Hatha Yoga text, and now the modern masters are there. We found many forms of yoga, Iyengar yoga, Ashtanga yoga. So those all comes under post-classical period. And here one more thing you should know, that many people think that Maharshi Patanjali was the founder of yoga. No, Maharshi Patanjali was not the founder of yoga. He only systemized the yoga, like he gathered all the yoga things in one form or in one text. Okay, so he just systemized, not the founder of yoga. This you should be very clear. Now, what is the meaning of yoga? Okay, some says yoga is union, some says it is samadhi, some says it is the sanyam, okay, control of your senses.
Okay, so here the Sanskrit word, root word is yuj. So yuj has three meaning. Okay, so first meaning is to join, and second meaning of yuj is samadhi, concentration, and third meaning of yuj is restraint, like control of your sense organs. So yuj has three meaning: to join, samadhi, and restrain. See here, yoga has the definition or meaning by different, in different text you will find different, that will go ahead, further we'll see, but here we are just saying what is the meaning of yuj. Yuj is union, so it is has three meaning: to join, samadhi, and restrain or control of your sense organs. Now next we will see the definition of yoga. So as a yoga student, you must be knowing that Patanjali is very famous definition: yogas chitta vriddhi nirodha, okay, complete cessation of mental modifications. And earlier, as you seen that meaning, that yoga has three meaning: join, samadhi, and restraint. So here that samadhi word is given by Maharshi Vyasa. So in Vyasa Bhashya, it is given that the true meaning of yoga is samadhi. So because Vyasa Bhashya is totally written on the Patanjali Yoga Sutra, so if in the Vyasa Bhashya it is given, so we can consider that Patanjali is also saying ki yoga meaning is samadhi. So according to Patanjali or according to Vyasa Bhashya, the meaning of yoga is, or the definition of yoga is samadhi. Okay. Now, like here the Vyas says yoga samadhi, that is given in the Vyasa Bhashya. Now in Yoga Vasishtha also the definition of yoga is given. So in different text different things are given, but all are saying it is the union of controlling your sense organs towards the samadhi. Okay. So mana prasamanupayah yoga ityabhidiyate. Yoga is called a skillful trick to calm down your mind. Okay? अपने मन को शांत करने के लिए, है ना, योगा इज टू काम डाउन योर माइंड, अपने मन को स्किलफुली शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. दिस डेफिनेशन इज गिवन इन योगा वशिष्ठ. नाउ देर इज अनदर डेफिनेशन गिवन इन कठो उपनिषद. स्थिरम इंद्रियाण धारणम. स्थिर इंद्रियों, इंद्रियों की स्थिरता, है ना, इंद्रियों की स्थिरता, धारणा, लाइक रिस्ट्रेन ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, दैट इज योग. अपने सेंसेस को, सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, दैट इज योग. एंड स्वामी विवेकानंद हैज ऑल्सो रिटन योगा इज रिस्ट्रेनिंग द माइंड. ओके, योगा क्या है? आपके चित्त को रिस्ट्रेन करना, उसको कंट्रोल करना, फ्रॉम टेकिंग वेरियस फॉर्म्स, है ना. In Swami Vivekananda is also given, है ना, like same as Patanjali is given, yogas chitta vritti nirodha. Now in Bhagavad Gita also many definitions are given for the yoga. So one is very famous definition is like samatvam yoga uchyate. This many times they have asked in the exam, like yoga is the equanimity of mind. मन को समत्व में करना, सम में करना, that is yoga. And it is given in Bhagavad Gita 2nd chapter 48 sloka. And next definition is given yoga karmashu kaushalam, है ना, that is also very famous. It is given in Bhagavad Gita 2nd chapter 50 sloka. That is skill in action is yoga. Skillfully doing action is yoga. Now there are another two definitions are given in Bhagavad Gita, that is in 6th chapter. Yogo bhavati dukha. Yoga becomes the destroyer of miseries. आपके सारे दुखों को दूर करने वाला क्या है? योगा है. And next is given dukha samyoga viyoga yoga. Detachment from the miseries caused by attachment is yoga, है ना, जो आपको दुखों से दूर करे, that is yoga. So these are the definitions given in various texts.
in the Patanjali Yoga Sutra, in Upanishad, in Bhagavad Gita, and Yoga Vasishtha. Now we will see what are the misconceptions in yoga. So I'm stopping here. So I want your contribution also in this. कि according to you, what you feel कि है ना योगा में बहुत सारी दूसरी अलग अलग गलत भ्रांतियां हैं या लोगों के मन में है ना योगा के प्रति कुछ और विचार हैं. So if you anyone would like to say on that, what are the misconception in yoga you have heard or you have found? Like before the joining yoga, you must have thinking ki yoga is this, but afterwards you found, oh, yoga is something else than that. What you are thinking? Yes, Meera ji, please. हाँ, मीरा जी. So basically, whenever we talk about the yoga, so people only think that it is the only bodily postures. Only performing asana is only yoga. They ain't aware about the vastness of the subject, and they don't have idea about the physical effects of the yoga. And most of the people thought it is only for the particularly religion like uh, Hinduism only, or Hindu follows yoga, another religion follows yoga like this. Good, good. Meera ji, what you are doing? Are you pursuing MA or you have passed MA? No, I am pursuing MA. I'm in Okay. last semester now. Okay, but because your answer is so precise and good, that is why I just thought कि I should ask you. A very good answer, Meera ji. Anyone else want to contribute one or two sentences? Just whatever you feel कि आप योगा में जब नहीं थे तब उसके पहले आपने क्या सोचा था योगा के बारे में, and when you joined the yoga then you found कि अरे योगा ये नहीं है, it is something else, है ना? और we just find कि योगा is only आसन और प्राणायाम. बाद में पता चला अरे इतनी सारी थियरी भी है योगा में, इतना सब कुछ पढ़ना है, there are उपनिषद, there are वेदा, there are भगवद गीता, है ना? Okay. Yes. हाँ Same ज्योत्ना जी. here. Before that, I used to think it is only physical. The only third limb, that is asan, was important. Ah, But when okay. I started diploma, I came to know that there is anatomy. And then when I entered MA, it was something else only. Okay. So now ठीक है. after doing MA, it is like totally what I had imagined when I started, and now where I am is totally different. Okay, thank you, Jyoshna ji. So I will share few more points on that. See, people consider that yoga is just a physical exercise. This is also a misconception. And it is necessary to be flexible before starting yoga practice. Many people feel that है ना योगा वही कर सकता है जो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है ना. अगर वो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है तो उनको योगा करने की क्या जरूरत है ना. पर जो नहीं है दे नीड मोर. एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ भूगत समाधि सिद्धिज मैजिक मंत्र तंत्र है ना. पीपल फील कि ये जो मंत्र तंत्र या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं दैट इज योगा है ना. दैट इज नॉट योगा. वो सिद्धि है ना विभूति सिद्धि दोज आर ओनली नॉट द योगा. दे आर ओनली जस्ट पार्ट ऑफ योगा. ओके. एंड फ्यू पीपल से कि है ना एक्सपेक्टेड मदर है प्रेग्नेंट लेडी है उनको योगा नहीं करना है या मेंस्ट्रुअल साइकिल में है ना पीरियड्स आ रहे तो योगा नहीं करना है. ऐसा नहीं है. देयर आर सम प्रिकॉशंस. आपको योगा में प्रिकॉशंस लेना है व्हेन देयर इज सम अदर. तो इट इज नॉट मिसकंसेप्शन. वी कैन से कि इट इज नॉट कि उनको नहीं करना है. दे कैन डू बट देयर आर सम लिमिटेशंस फॉर दैट. उनको हर आसन नहीं करना है बट दे कैन डू मेनी. Now, yoga is not merely to do with asana and pranayam. They are a part of yoga, not the whole of it. है ना. सिर्फ आसन और प्राणायाम ही योगा नहीं है. These are only one small part in a yoga, in the whole yoga. And yoga is not a rope trick, gymnastic, etc. है ना. योगा सिर्फ बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल करने के लिए बॉडी को तोड़ना वो सब नहीं है. योगा इज बियॉन्ड दैट है ना. आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा है योगा. It is more about your mind also. And yoga does not require blind faith in any particular deity or belief system.
एंड some people feels कि योगा जो है ना उसमें अगर आपको फेथ होगा, आप है ना शिव कोई पूजा करते हैं, then you can go for yoga, or if you follow Hindu tradition then only you can go for yoga. It is not like that. Okay. And many consider yoga as an exercise and well-being regime of the Hindus. Yoga is not limited to any caste, creed, religion, sex, race, etc. It is universal in nature, है ना. योगा किसी एक ट्रेडिशन का नहीं है, किसी एक कल्चर का नहीं है. योगा इज फॉर यूनिवर्स, मतलब हर कोई कर सकता है योगा. इट इज नॉट बाउंडेड इन वन. Now what are the aims and objectives of yoga? What you feel कि आपको क्या लगता है योगा का अल्टीमेट जो एम है, what is that? इसमें भी एक या दो जन अपने पॉइंट्स रखेंगे. What is the aim of yoga? आपको क्या लगता है? What do you feel? Anyone? Just you can say your own words also. That is fine. Gives Yes, Vandana. Hi. hi. It gives the contemplation of your mind. Yes. Uh, Good. Good answer. Anyone else want to add? Yes, ma'am. Before a few years back, as we know, the ancientness of yoga, that is the main purpose of the yoga is the union of the embodied embodied body and the universal soul. Good. 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 It, Thank that you. that was the main aim, but Mhm. nowadays that has been changed, and Mhm. now we focused on the integration of the personality aspect. There are so many aspects of the personality, Mhm. so we try to integrate by practicing the yoga. Thank you so much. Thank you, Miraji. Kirti, you want to say? Add? Ma'am, I just wanted to say it was enhancing your physical, mental, and spiritual well-being, ma'am. That's Yes. what I. Yeah, that's Yeah. good. Yeah. So here we can see कि yoga is a tool to speed up spiritual evolution, that Swami Vivekananda says, and as all have saying, it is the ultimate aim to free from suffering, है ना, दुखों से छुटकारा पाने के लिए, and it is for calming down your mind, and it also strengthen your mind, है ना, it builds your willpower, and it also give you more strength to reach your goal, your life goal, that purushartha. And it also gives good deep relaxation of your on muscular level, and it also balance your pranic your pranic level, and it also increases your willpower and your mental strength, and on intellectual level also it gives you more strength and more sharpen. On emotional level it give you more balance, or better balance. So these are all the aim and objectives of yoga. Now, in few minutes, I will cover a little bit the part of Veda also. So, as we have discussed, Veda are around 5,000 years ago we have found, or it is old, and some says it is 10,000 years also old. The Vedas are, and these Vedas are divided into like earlier we have found the yoga, how the yoga has divided, like that Vedas are also divided in the in the in Veda the yoga has given, and after that also yoga has given in many texts. So accordingly that also earlier whatever we have seen on that level only, we are just considering little more categorization, that yoga has divided into four main periods. So first take pre-Vedic period, like during the Vedas yoga was there, but before that also the yoga was there, na? So that Kirti has told that we found the yoga in the Indus Valley civilization. So that was the pre-Vedic period. So in that time also वेद के पहले भी जो योगा के पोस्चर होते थे, and we have found that many postures and many ideals on that. So we considered that yoga was there before the Vedas. We found the Vedas 5,000 years before that the yoga was there, and during the Vedic period also. So in the Vedas the yoga has given in the Upanishad, and classical yoga period is that Patanjali yoga period, and
Post classical period is like Hatha Yoga, Tantra Yoga, and nowadays that is post classical yoga. Now, these Vedas are called as the oldest spiritual text, okay, which we found in the Hinduism, or we can say it is anyway the oldest spiritual text, or it is the oldest text. Vedas are, and it says that Vedas are not any book, like they says it is directly written by some devata or somebody who is not human being, okay. And during the approximately Mahabharata period, this Krishna Vaishampayan Vyas, he compiled the yoga and divided the yoga into 4 parts. This is important point, you should remember that Krishna Vaishampayan Vyas, he compiled the Vedas and divided them into 4 parts, that is Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Atharva Veda. And now here we one by one will see what are the Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, and first we'll see what is Veda. So root word for Veda is Vid, and Vid has 3 meaning. First meaning is to know, second is to be, third is to obtain. To know about God, about Ishwar, to be with God, and to obtain samadhi, or to obtain God, that is to obtain. So these are the 3 meaning of Veda. And Veda is also called Aparusheya because it is not any human creation. It is said that it is not any human creation. So it is not written by any Purush, any human being. That is why it is Aparusheya. And at the same time it is Shruti tradition. Shruti means what the Rishi has heard in their deep meditation, whatever they have heard, they have written in the text form. It is not that some person or some Purush or some human being written. The Rishi said ki whatever in the deep Samadhi state, whatever I have heard, that I am writing in the Veda. It is not written by any human. So in the Veda, like in other text you find कि है ना book के नीचे author का नाम लिखा है, writer का नाम लिखा है, but in the Veda you don't find any author or writer name because it is written by Rishi, and Rishi is somebody who sees, है ना. They says कि जब मैं deep samadhi state में था, when I was in deep samadhi state, that time I heard these things, so I have written in Veda. And so according now here there are 3 important characteristics of Veda. First is they are Aparusheya, है ना. They are written not by any human being. Aparusheya, Anaditva, they have no beginning, and Nititva, they have eternally existed, है ना. The Vedas were पहले भी थे और बाद में भी थे. Okay, these 3 characteristics are very important for exam purpose. Now there are 4 Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda, and these 4 Vedas are generally divided into 2 sections, that is Karma Kand and Jnana Kand. So in Karma Kand there are all the rituals, yagya, and in Jnana Kand there is all the knowledge part, that is also called Upanishad or Vedanta. So here I have given, I have just created in short, because one by one will go, that it will take down. Now it is already 3:30, so I will just go through this. So these are 4 Veda: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda and Atharva Veda. So Rig Veda is, in Rig Veda, if we consider that Veda has, it is some book. Veda is a book. So that first part, second part and third part, like if you categorize or you divide them into 4 parts. So, okay, so first part is all the mantra, okay, Samhita, that is all the mantra, and second Brahman part, third is, okay, Aranyak, and fourth is Upanishad part, okay, that you will understand later on. Let's see here. So in Rig Veda all the hymns are given, है ना. Rig Veda में क्या है, मंत्र है, स्त्रोत्र है. It is written in the poetry form,
Rig Veda is written in the totally poetry form. And in the Yajurveda, all the rituals are given in the Yajurveda. And Samveda consists of all the songs, Indian जो music है, that consists of in the Samveda, it has come from the Samveda. And अथर्व वेदा में है ना rituals भी हैं, यज्ञ भी हैं, और like you can say आयुर्वेदा जो है वो भी अथर्व वेद से आया है. So in this way that Vedas are divided. Here some components are given. It is already 3:30, so I will just go for question answer session. This Veda part afterwards you can see one by one in detail. It is just demo lecture for half an hour, so I'm completing here. I will go little bit for question answer. Let's see how much you can answer. So can you just read the question and suggest your answer? Anyone, or you can write in the chat box, that will be great. है ना? इंटरनेशनल योगा डे जब आया, like on which day it has declared? Okay, I got one answer. Okay, second. Okay, second answer. ठीक है. Anybody else want to? At least 3 to 4 people should answer ना. आप जो भी आपको ठीक लगे वो आप आंसर करो. Good. Good, you are contributing. Okay, maybe you can Google it also. Okay, and see if your answer is correct, because I don't think it is correct answer. Now I will say the correct answer at the end. Now second question. कि 2017 योगा डे कहाँ पे मनाया गया था? ओके, मैं आंसर भी बोलते चलूं. इसका पहले का जो आंसर है ना, दैट इज लास्ट आंसर, December 11, 2014. करेक्ट आंसर है इसका December 11, 2014. और सेकंड का आंसर लखनऊ. ए आंसर. गुड, जिन्होंने आंसर दिया. नाउ नेक्स्ट. या यू कैन अनम्यूट एंड से ना. ए. C. C. Huge. C. Huge, C. huge. C. You see. हाँ, सी. Yeah, Yes. C. very common. Yes, very good. Correct answer is C. Answer is C. Now next. अभी जून 2020 में योगा डे का थीम क्या था? A. Yoga for health at home. गुड. ये सब है ना क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं. हाँ, नाउ दिस समत्वम योग उच्यते. D. 2.48. 2.48. 248 years. 248. Very good. Yes, correct answer. Now this yoga karmasu kaushalam. What is the correct meaning? What is the right meaning? You can unmute and say. C. C. Selfless. Skillful action. Anyone else? Selfless. Skillful action. action. Selfless. B. B. C. C. Selfless. C. B or Yes. D.
No, it is B. It is B. It is B. Selfless. Yeah, B. Selfless action. Nishkama karma. Nishkama karma. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. I hope you have enjoyed the session. These are the question already asked and मैंने वो prepare किया कि जो आपको आज सिखाया उसमें से थोड़े आपको questions पूछे. Okay, and if you have any further question answer you can ask. Anything you want to add or you want to ask about the net, or if you want to take admission, already I have given the payment details, and you can pay directly on Arambh Yoga this in bank account. And Ma'am, if you have yes, sorry. Kirti. Sorry, ma'am. It's that every day class will be 1 hour, paper 1 and 1 hour paper 2, or it depends, ma'am? No. It's every Tuesday there will be paper 1 compulsory. Okay. And every Monday paper 1 will be for 1 hour. Okay. Okay. And other days paper 2 will go, and like mostly the teacher will take 1 hour paper 1 and 1 hour paper 2, but on Tuesday every day you have 2 hours paper 1, and Okay, other ma'am. days yoga will be there. Okay. That timetable and all we will provide you in advance, Okay. so that Okay. Mm. Yeah. Thank Madam, you, ma'am. please change the time, ma'am. Yeah, see, currently our time is 3 p.m. to 5 p.m. Monday to Friday, and Saturday will be your test. So there is no fixed time for Saturday. You can give text. We will give some duration, like in within 5 hours, 6 hours, or no, half day. We will give you in half day at least. You complete any time, complete the test. So Saturday is not a fixed time, but Monday to Friday you have fixed time 3 to 5. Currently, see, some people are no, they are not convenient with this time, but कहीं ना कहीं हमें एक टाइम तो कंसीडर करना पड़ेगा ना जिसमें सबसे ज़्यादा लोग एनरोल करते हैं. सो ये बैच में सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं 3 to 5 के लिए, बिकॉज मोस्टली फीमेल आर फ्री दिस टाइम. पर अगर किसी को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, गिव योर नेम, और अगर आपका पेमेंट आएगा एटलीस्ट है ना, वी इफ वी फाइंड 10 people, then we can start another batch also. But at least we want from your side surety that you are joining. Okay, so now I am ending here. And for paper 1, Balkrishna sir is here. So I will hand over to Balkrishna sir. Sir, you are here? Yeah. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Sir, we cannot see you. Yeah, just switching it on. Okay. Sir, I will make you host now. Oh, thank you. Oh, thank you, Sushma ji. Okay, sir. Okay. So, good afternoon, everybody. Okay, all of you did yoga, so generally philosophy हो गया, Veda हो गया, Upanishad हो गया, आपका history of yoga हो गया. So please come back from that seriousness and just relax a little bit. It's a very interesting one. The first which I'm taking is teaching aptitude. Okay, we all have that natural ability to teach. Okay, सब कोई किसी न किसी को हमेशा सिखाता रहता है कुछ न कुछ. Okay, whether related to your school subjects, whether it is related to mobile software or how to operate mobile or how to operate laptop, सिखाते रहते हैं. So we all have that natural ability to teach. Okay, so teaching aptitude यही देखा जाता है कि वो ability कितने तक है आप में. Teaching aptitude particular in this unit. So आज I will take that. In that I have selected the subtopic level of teaching. Okay, why I have selected? There are two reasons. The first reason that this topic is very important, level of teaching, and the second reason ये हमारे day to day life से related है.
So if you have some child at your house, या हम खुद बच्चे थे जब, so you have to remember when I teach this topic, particular level of teaching, आपको याद रखना है, अगर आप खुद को नहीं याद रख सकते, सपोज भूल गए कि आप प्राइमरी में कैसे थे, मिडिल स्कूल में कैसे थे, और अभी ग्रेजुएट, अभी तो सबको याद होगा प्राइमरी या मिडिल स्कूल में कैसे थे, अगर आप भूल गए हो तो आपके घर में कोई भी बच्चा होगा, यू जस्ट सी हिम एंड यू जस्ट उसका होमवर्क देखिए, उसका स्टडी देखिए, और आपको समझ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग, मैं किस चीज पे बात कर रहा हूँ. सो वन थिंग यू कीप इट इन योर माइंड, I say that just relate it to your daily life, and it's very easy then to understand. अब हम सबको प्रॉब्लम आती है कि like if you see टमाटर, अगर हम टमाटर देखते हैं, टमाटर रेड भी होता है और कच्चा टमाटर ग्रीन भी होता है, राइट? ओके, बट अगर बच्चे को टीचर ने सिखा दिया that tomato is red, then आप कुछ भी कर लीजिए, नो मैटर व्हाट, वो बच्चा बोलेगा टमाटो रेड ही होता है. एंड इफ यू शो हिम और हर ग्रीन टमाटो, वो कभी तैयार नहीं होगा. नो, व्हाई? माय टीचर टोल्ड मी दैट टमाटो इज रेड. ओके, टमाटर लाल होता है. ऑलराइट, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, व्हाई, ये क्यों हुआ है ऐसा? बच्चा कहता है yes, there is a science behind it. Many educationists, many educators, teachers, all the scholars, सबने ये सब प्लानिंग बनाया है और वो हिसाब से ये होता है. हमारा टॉपिक भी एग्जैक्टली यही है, लेवल ऑफ टीचिंग. सो when a child is studying in a lower classes, say primary, there the level of teaching is memory level. Now, what is memory level teaching? So memory level teaching is basically बिना सोचे समझे रट लेना. Okay, that's the memory level teaching. So so that's why when a teacher teaches कि tomato is red, बच्चा बिना सोचे समझे रट लेता है उसको, नहीं टमाटर लाल होता है, टमाटर लाल, टमाटर लाल, टमाटर लाल, finished. उसके माइंड को वैसे ट्रेंड कर दिया जाता है. So that is a memory level teaching. Remember. फिर आपने देखा होगा व्हेन मिडिल स्कूल में जाते हैं आपके घर में बच्चे, ओके, फिर वो आपको जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनके क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं. क्यों, कैसे, ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, ये क्यों करना है, क्यों? बिकॉज दैट टाइम मिडिल स्कूल मेमोरी लेवल से बच्चा आ जाता है, टीचर उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सिखाता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन सिर्फ सपोज अगर आपने कोई न्यूटन्स लॉ लिया, सो अगर मुझे मेमोरी लेवल से सिखाना है, आई विल जस्ट टेल द चाइल्ड टू मेमोराइज दैट न्यूटन्स लॉ. बट अगर मुझे मिडिल स्कूल बच्चे को सिखाना है, ओके, सो आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ क्या है, ओके, व्हाट इज, हाउ टू अप्लाई इट डे टू डे लाइफ में, वो कैसे कनेक्ट करेगा दूसरे चीजों के साथ. So that is understanding level. He will understand the Newton's law, and if I tell him to make any project based on that, he take any example and make any project based on, say, first law of Newton. Okay, first law. So that child will make. But if you did the teaching at memory level, and if then you tell the child, he cannot, because he just, you say, I will say recited like a poem that law. सिर्फ एक रट लिया है, that's it. So that's the memory, and when he understand, then that's the understanding that level of teaching is. Okay, so ये दो आपको याद रखना है. Now when I will talk the third and the last level of teaching, that is reflective. When I say reflective, you have to remember post graduation. We all are in post graduation. I understood that कि हम सब नेट कर रहे हैं, and post graduation is compulsory for the net. और graduation आप सबने किया ही है, not post graduation. So you have to remember your graduation and post graduation. For third level, that is reflective level. Now you, in that you see when you get the projects from the professor. ओके, और आप प्रोफेसर्स आपसे क्या एक्सेप्ट करते हैं कि आप वो रिसर्च में
अपना खुद का इंसाइट्स डालें और वो रिसर्च रेडी करें. बट बहुतों के रिसर्च रिजेक्ट क्यों होते हैं? व्हेन दे कॉपी इट फ्रॉम द इंटरनेट. नाउ देयर इज नथिंग इन इट, बट सिंस प्रोफेसर का जो एम रहता है वो रहता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. Okay, I will use the short form, that is RLT. They want you to give your view. They want you to give your insight in that particular project. What you think, not only understanding. Remember, reflective is not only understanding, but your view on that particular topic. So these are the three levels: memory, understanding, and reflective level. Remember. Now, second point, let me give you one more example, you will understand. Okay, suppose I take a poem. Okay, I take a suppose Hindi poem. I took it on Rani Lakshmi Bai. All right, that Subhadra Kumari Chauhan have written the poem. सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी. All right, ये पोयम अगर मुझे रानी लक्ष्मीबाई का छोटे बच्चे को देना है, what I will tell him, just recite the poem and present it in the competition. So वो बच्चा बिना वर्ड का मीनिंग समझे, बिना कुछ भी समझे रटेगा, जाके कंपटीशन में बोलेगा, और अगर अच्छा बोलेगा तो प्राइज जीतेगा. बट बच्चे ने क्या वो पोयम का मीनिंग समझा है? No. Why? Because my teaching, my level of teaching was memory level. कि मुझे उसे सिर्फ कंपटीशन के लिए तैयार करना है कि वो पोयम रिसाइट करे वहां पे जाके. Recite the poem. That's it. That is my aim. So that comes under memory level. Now, same poem if I have to give to middle school children, what I will do? I will tell to write उसका भावार्थ लिखिए. Okay, what the poet क्या कहना चाहती है exactly with that poem. So now the middle school will understand and then they will recite. Okay, and the same poem, if I have to use it at reflective level, I will tell you all to evaluate that particular poem. So आपको अपने हिसाब से आपने क्या समझा है, you have to evaluate that poem. That's just an example कि सेम टॉपिक को मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव पे हम कैसे ले जा सकते हैं. डेफिनेटली नाउ राइट नाउ आई विल शेयर माय पीपीटी एंड वी विल डिस्कस, बट बिफोर आई गो ऑन द पीपीटी यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर बेसिक आइडिया कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव क्या है. ओके, दिस इज व्हाट memory, understanding and reflective. If you understand these three concepts, अगर आप ये basic अभी समझ चुके हैं, so many question if I ask you right now, you will answer me. Okay, suppose if I ask कि out of these three level of teaching, which teaching had given importance to rote learning? Just a memorization, understanding, memory or reflective? You can easily answer me. All right, memory level का. If I'll ask you कि critical thinking कौन से level में develop होती है, you can easily tell me, okay, reflective level में develop हो जाती है. Okay, like this. So ये अगर आप basic आपका ये clear है अभी memory, understanding and reflective को लेके, so many questions जो net में आएंगे आपको MCQ, that will be easier. And that's why you should focus on clearing out your concepts. एक बार concept clear है तो like 15-20 questions easily you can solve and easily you can pass the NET exam. All right. Now let me share my PPT and we will go formally. All right. Okay. Can you see the PPT? Okay. Thank you. So my objective is today of this particular topic. First, you will be able to understand the meaning of teaching aptitude. My second objective, you will be able to understand the different level of teaching. My third objective, you will be able to understand the difference between the different level of teaching. And my fourth objective, you will be able to analyze different level of teaching.
Now, why I have written these objective? Because my objective itself is based on 3 level. So when you analyze the last one, okay, that's your reflective. When you understand and you difference between 3 teaching, that is your understanding. Yes, I didn't include the memory level in it. And in net exam, you have to more focus on reflective level of teaching, because we all are post graduation हम कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, so reflective level is most important, because we all are graduate and postgraduate. So these are my objective. I have included understanding and reflective. Now, memory के लिए right now आपने योगा में first 2 questions you did. In that they ask you something dates, right? कि particular योगा कहाँ पे हुआ था 2017 में, and something about the year they ask. मैंने वो question देखा नहीं ध्यान से. That was your memory level based. वो आपके पूरा मेमोरी पे आधारित था. उस क्वेश्चन में कैसा होता है, आपको आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ऊपर वाले का नाम लेके 4 में 1 आप मार्क करते हैं. All right? Yeah, that's true. हम सब ने नेट एग्जाम दिया है, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं जिसमें एमसीक्यूज आते हैं. So, जो मेमोरी लेवल वाला, okay fine, if that is a understanding or reflective वाला है, तो you will think and then you will answer the question. But if it is memory based, then 2 seconds you will take कि आपको आता है या नहीं आता है. Okay, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है and you say नहीं मुझे नहीं आता, then done, then over. Then फिर वो guess work होता है, आप छोड़ देते हैं. Frankly, this happens with everyone. So memory, मैंने इसमें understanding और reflective लिया है. memory जो आपने dates वाला किया questions. Okay, let's go on. Teaching aptitude, my next slide. Okay, I have just 4 words I have written for teaching aptitude. Natural ability to teach. Very simple. This is just a dictionary meaning of the word aptitude. So teaching aptitude, natural ability to teach, that is your teaching aptitude. Okay. उसके बाद आप उसे professionally develop करते हैं by doing various courses and all. But teaching aptitude का यही meaning है. और आप देखेंगे नेट एग्जाम में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लगता है. दे डोंट वांट एनी प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स, आपको कंपलसरी बीएड या डीएड करना ही है. इफ यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, यू कैन अप्लाई फॉर नेट एंड यू कैन टीच इन द कॉलेजेस एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, और यू कैन बी अ गेस्ट लेक्चरर एनीवेयर. So that's why teaching aptitude, natural ability to teach. आप में कितनी natural ability है, that's what they want to observe. So let's come on our topic. Memory level of teaching. Everything I explained you, in memory level of teaching, your main focus is on mental aspects. आपको हर चीज रटाई जाती है. Okay, just a memory. ये याद करो, वो याद करो, ABCD बोलो, 2 का टेबल बोलो, 4 का टेबल बोलो. All these things come to provide knowledge of facts. जैसा मैंने बोला, आपको facts याद रखने हैं. योगा डे कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, कहाँ पे हुआ, किसने इनॉग्रेट किया, कौन सा थीम था. प्रोवाइड नॉलेज ऑफ फैक्ट. टू रिमेंबर लर्न फैक्ट. आपने जो भी नॉलेज लिया है उसे आप याद रखो. ओके. एंड टू रिकॉल एंड रिप्रेजेंट द लर्न फैक्ट. आपको जो भी जिस भी टॉपिक पे नॉलेज दिया जाता है और उसके बारे में जब पूछा जाता है, आप रिकॉल करिए एंड प्रेजेंट करिए. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ योर पर्टिकुलर एग्जांपल, दैट योगा डे वाला. ओके, आपको टीचर ने स्लाइड से दे दिया नॉलेज. ओके, फैक्ट बता दिए. ओके, आपको वो फैक्ट्स लर्न करने थे और जब एमसीक्यू आए तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना था. सिंपल. दैट्स द मेन फोकस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग. इवन इन विद कोई भी बच्चा होगा आपके घर में, उसके साथ भी यही होता है. उसको पोयम सिखा दिया. ओके, उसे पोयम याद करना है और जब टीचर पूछेगी उसे बोल देना है. दैट्स इट. दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. देयर इज अ बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, हार्वर्ड. आप उनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ लेंगे. उन्होंने बताया था इसके लिए कि अगर आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग करनी है तो आपको कंटेंट कैसे प्रेजेंट करना है. सो ही से फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस. व्हाट यू डू इन इंट्रोडक्शन, यू रिलेट
child's present knowledge with the previous knowledge. That is your introduction. Presentation, you do all kinds of explanation, you use all your teaching learning materials in presentation. Third, organization, whatever you explained, you organized in a proper way. Fourth, comparison, you compare. For example, if you teach child about magnet, okay, so last में आप compare कर देंगे कि magnet works only on certain metals, non-metals पे effect नहीं करता. So like that you do comparison, and if you take gravitational force, so earth attracts all the objects, okay. Then the last comes evaluation. Evaluation, that whatever you taught, आपने जो भी सिखाया है बच्चे ने कितना अचीव किया, just to see that you do evaluation. So हार्वर्ड ने ये 5 steps दिए थे कंटेंट को मेमोरी लेवल पे प्रेजेंट करने के लिए. All right. Now the next, social system. So जब टीचर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग करता है, so क्लास का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास. ऑल राइट. सो डेफिनेटली मेमोरी लेवल में टीचर इज मोर एक्टिव एंड डोमिनेटिंग, रिमेंबर, क्योंकि उसे ही बताना है, बच्चे को सिर्फ टीचर को फॉलो करना है. इट्स लाइक ट्रेन इंजन, टीचर इंजन, पीछे डब्बे लगे हुए हैं, इंजन जहां जाएगा बच्चे वहां जाएंगे. ऑल राइट. बी, जो टीचर है वो कंटेंट प्रेजेंट करता है, पूरी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है और बच्चे को मोटिवेट करता है. नाउ प्रेजेंट द कंटेंट बिफोर स्टूडेंट. अभी आप थोड़ा इस पे, आपको थोड़ा ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, बट अगर आपको ये समझना है तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं. बहुत सारे टॉपिक्स में टीचर कंटेंट प्रेजेंट नहीं करते, बच्चों से निकलवाते हैं. They ask questions, they show videos, they do all kinds of things, and the children come up with the content. All right. But यहाँ पे ऐसा नहीं है. Here teacher presents everything, teacher controls everything, and teacher motivates the children. अगर आंसर पूछा बताया, so very good. That reinforcement होता है यहाँ पे, but बहुत limited होता है और informal type का होता है. See, students occupy a secondary place. Definitely teacher active है, student passive है. Last, students accept the teacher as ideal and follow him silently. That's why I told you कि टीचर ने बोला है टमाटर लाल होता है तो लाल होता है. आप ग्रीन टमाटर दिखाएंगे, टमाटर ग्रीन नहीं होता. अगर गलती से टीचर ने बोल दिया कौवा, crow is white, so crow white ही होता है, crow is not black bird. So that one thing you have to remember. So support system in the sense, how do teacher organize? टीचर इसमें ऑर्गेनाइज कैसे, मतलब सपोर्ट कैसे करता है अपने टीचिंग को. so, जो इवैल्यूएशन है वो रिटन और ओरल हो जाता है. जब भी रिटन इवैल्यूएशन होगा तो उसमें क्वेश्चंस जनरली होंगे, रिकॉल, रीसाइट, फाइंड आउट द ऑड मैन, सर्कल इट, लाइक दैट क्वेश्चंस विल कम. More emphasis is given to rote learning. इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं and everything on recall, मतलब आपको सब कुछ याद करके ही लिखना है. So this is the support system in memory level of teaching. Now from your net point of view, जो आपको questions आते हैं, points to remember. memory level of teaching जब भी करते हैं बहुत easily बच्चे forget भूल जाते हैं. Not useful in your real life. Definitely thinking और reasoning के लिए इसमें place नहीं होता, because you have to follow silently to your teacher. Students are very inactive. I told you it's a secondary. Class is very mechanical. Class का जो environment होता है बहुत ही formal होता है. rote learning, sequential learning को बहुत ज्यादा importance दिया जाता है. And question answer, मतलब बच्चे को question पूछने नहीं दिया जाता, बोला है उतना करो. So question answer को इसमें importance नहीं होता. These points you need to remember in memory level of teaching. अगर हम suggestions की बात करें, so जब भी आप memory level of teaching करते हैं, आपको content meaningful रखना है, पूरा content present करना है, sequence proper रखना है, और इसमें repetitions और exercise को बहुत ज्यादा time देना है. अगर बच्चे बहुत ज्यादा थक जाते हैं, then you have to avoid it. That's why you will see now in the schools
जो टाइम टेबल्स हैं उसमें 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट के बाद एक इजी सब्जेक्ट बोला जाता है डालने को, ऑलराइट, क्योंकि जनरली लोअर में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है, लोअर क्लासेस में रीइंफोर्समेंट रखना चाहिए, गेनिंग नॉलेज को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और जो भी आपका रेपिटेशन होता है एक सीक्वेंस में होना चाहिए. सो दीज आर द सजेशंस फॉर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. Now, let's go on understanding level. In understanding level, the main focus is mastery over concepts. आपको जो भी concept है उस पे आपकी मास्टरी करने के लिए ये लेवल ऑफ टीचिंग होती है. इसमें मैंने एक मॉरिसन है स्कॉलर, उनका एग्जांपल लिया है कि हाउ टू प्रेजेंट द कंटेंट. सो उसमें आपको एक्सप्लोर करना है, मतलब बच्चे के प्रीवियस नॉलेज पे क्वेश्चंस पूछने हैं और उनसे ही टॉपिक निकलवाना है. देन आपको टॉपिक प्रेजेंट करना है, टॉपिक एसिमिलेशन मिलाना है, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है, और लास्ट में एक बार वापस से रिकॉल करना है. All right, so these are the points given by Morrison. Now, in understanding level of teaching, हमारा social system कैसा होगा स्कूल का? तो इसमें लगता है कि teacher behaves like a controller, but no. In this level of teaching, both are active. Remember, teacher and students. Student can ask a question if they don't understand anything. ओके, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के मोटिवेशन यूजफुल होते हैं. और जो मैंने अभी पिछला स्टेजेस बताया 5 का, सो जो फर्स्ट 2 स्टेज होता है जहां पे टीचर एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लेन करता है, वहां पे टीचर ज्यादा एक्टिव रहता है. और जो लास्ट के 3 स्टेप्स हैं, ओके, एसिमिलेशन एंड रिकॉल एंड एवरीथिंग, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं. ठीक है, इसमें आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे? सो इसमें इवैल्यूएशन कैसे होता है? रिटन होता है, ओरल होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं. सो लाइक दिस, इसमें आपका इवैल्यूएशन होता है कि आपको टॉपिक कितना समझा है. ओके, देन व्हाट पॉइंट्स यू विल रिमेंबर? कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जनरली आपको मेमोरी लेवल के बाद ही करना है. इसमें स्टूडेंट टीचर दोनों एक्टिव रहते हैं. ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, और इसमें जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी देते हैं. ये रॉट लर्निंग नहीं है. इसमें टीचर का रोल जो है वो आर्किटेक्ट और बिल्डर का होता है. So these things you need to remember from your net point of view for understanding level of teaching. Then comes suggestions. Okay. इसमें आपको टीचर को बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक रहना पड़ेगा, बच्चों को फ्रीडम देना पड़ेगा, मोटिवेशन लेवल हाई रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चे आपको क्वेश्चन पूछ सकें. एस्पिरेशन लेवल भी हाई रखना पड़ेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर भी जाए. जैसे जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर जाएगा, रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करेगा, बच्चा इंटरेस्ट लेगा उसमें. Now, next is your reflective. Now, when we talk about reflective, what I told you is important. Reflective level में जो सबसे important आपको याद रखना है कंटेंट प्रेजेंट करते हुए, कि इसमें कंटेंट कभी भी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज नहीं होता. You go as per the child. और इसमें जो टीचर का रोल होता है वो एज अ फैसिलिटेटर होता है टीचर, कि बच्चा जो भी बोल रहा है, जो डायरेक्शन में जा रहा है, उसको गाइड करना और नॉलेज एंड एवरीथिंग जो भी चाहिए फैसिलिटेट करना. सो लेट्स सी रिफ्लेक्टिव में फोकस कहाँ होता है. इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग, ओके, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें उसमें फोकस की जाती हैं कि बच्चा खुद का नॉट बच्चा, पोस्ट ग्रेजुएशन वी ऑल आर एडल्ट, सो उसमें हमारी ओरिजिनल थिंकिंग हो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा हो. सो दीज आर द फोकस इन रिफ्लेक्टिव लेवल. अगर हम रिफ्लेक्टिव लेवल में बात करें तो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ हंट. हंट ने भी दिया है कि कंटेंट को प्रेजेंट कैसे किया जाता है. सो हाउ फर्स्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको सामने देना है,
Once you give the problem, you have to students have to construct the hypothesis for that problem. And hypothesis, we all know, it's a temporary solution given to any particular problem. That's hypothesis. So to construct a hypothesis by students, then students will apply their insight, thinking and everything for verification of hypothesis. Once they verify, the problem is solved. ये हंट का मॉडल है जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर योर थिंग. आपको अपना याद रखना है रिसर्च वगैरह में कैसे होता है. इसमें क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है. सो क्लासरूम इज फुल्ली ओपन एंड फ्री. स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्टिव और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. इसमें जो सोशलाइजेशन है स्टूडेंट का वो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, थॉट शेयर करते हैं. सो उसमें जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होता है. और क्लास का पूरा एटमॉस्फेयर है वो फ्री होता है. सो उसमें बच्चे कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के जरूरतों के प्रति सेंसिटिव होते हैं, सिंपैथी रहती है. ओके अब इसमें आप इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं. वी ऑल सी कि हमको एमए में ज्यादा करके वेटेज पूरा ऐसे टाइप क्वेश्चंस होता है. व्हाई? सो बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ओके दैट्स इट. इसके बाद प्रॉब्लम यू हैव टू पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर कि इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है. इसमें डीप थिंकिंग, केयरफुल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता है. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चा रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. टीचर जो है पूरा रोल उसका डेमोक्रेटिक होता है. इसमें स्टूडेंट एक्टिव होता है. स्टूडेंट के पूरा ओरिजिनल इमेजिनेशन पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है. और कोई भी नॉलेज स्टूडेंट के ऊपर फोर्स नहीं किया जाता. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू. सजेशन, जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल करेंगे तो इसमें एस्पिरेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए. हर रिलेटेड स्टेप जो है उसे आपको प्रॉपर फॉलो करना है. क्लासरूम में कोऑपरेशन, लव और सेंसिबिलिटी रखनी है. और आपको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा encourage करना है ओरिजिनल और क्रिएटिव होने के लिए. सो these two points you need to remember for reflective level of teaching. इसके अलावा as I say कि इसको importance है, तो I have written minus and plus point also. प्लस पॉइंट है रिफ्लेक्टिव लेवल का कि ये पूरा लर्नर सेंटर्ड है, हायर क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हाईली थॉटफुल है. ओके सो अगर आप थॉट की दृष्टि से देखेंगे तो मेमोरी लेवल थॉटलेस हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल होता है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो हाईली थॉटफुल होता है. माइनस पॉइंट क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल का कि ये स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है और इसमें जो कंटेंट है वो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज नहीं होता. Okay, so you go with the flow of the class. So content is not very systematic and organized. These are the few points which you need to remember. Okay. Now let's see. You just need to understand. मैं एक बार recall कर देता हूँ. Memory level totally rote learning. Understanding level mastery over concept and understand and comprehend the thing. Reflective level is your own thinking, your original thinking, creative thinking. Okay, so I have put few questions. Let's see. You can tell me the answer. Which statement is true for MLT's memory level of teaching? Just read and you can answer me. Remember, learn facts. Remember which state? Okay. So you can tell me the option A, B, C, or D. Let's see. C. Okay, and anybody else?
So which statement is true for memory level of teaching? So memory level में कौन सा statement true है? So training of mental aspect, all of the above. The answer is all of the above. Remember, because memory level में क्या होता है, you have to just recall. आपको सिर्फ facts याद रखने हैं. वो सिर्फ मेंटल ट्रेनिंग होती है आपकी, उसमें आपकी ज्यादा और किसी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता. ओके, लेट्स गो ऑन द सेकंड. चूज द राइट स्टेटमेंट फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. Class environment is fully open and free. Students are active and self-motivated. Form basic of socialization, and atmosphere of cooperation, social sensitivity and sympathy, and E is all of the above. You think yourself and then answer. D. What? D, all of the above. Sorry, I did not write the number. That is E actually, sorry. E. Okay, yeah, that's right. So remember, All of the above. All of the above. Absolutely right. So when you solve these type of questions, ना remember, रिफ्लेक्टिव लेवल में आपको खुद रखना है और आपको सोच लेना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत. Which is thoughtless level of teaching? I have not written. Memory Okay. level. Perfect, right. It's a memory level. Thank you. Which statements are, look, ऐसे क्वेश्चंस नेट में थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, so just see which statements are true for memory level of teaching. Choose the correct code. मेमोरी लेवल के लिए कौन सा इसमें से राइट है? ओके, तो नीचे कोड्स दिए गए हैं, यू हैव टू चूज द कोड. सेकंड, थर्ड, फोर्थ. Sir, it's A. You want to say A, not A, B, C, D. You have to choose the code out of first, second, third, fourth. Code 3A and C. Lovely, very good. That is absolutely right answer. Student इसमें inactive होता है और knowledge को importance दिया जाता है. Perfect. और बाकी जो दो हैं, classroom environment and creative thinking, that is the feature of reflective level of thinking. So absolutely right. And the last is I kept it match the following. So you have to tell me. First है reflective level of teaching. What do you think? उसका क्या होगा? A, B या C? C, Limited. sir. For first one, C. That means you want to say कि reflective level of teaching में mastery को importance दिया जाता है? Oh, sorry, sir. It's not good for young learners. Okay, that is right. Let's go on the second. Memory level is Rote learning. Okay, and third तो जो बचा है that will be there. So thank you everyone. Wait, just let me stop sharing. Okay, thank you. If you want to ask any questions regarding net, you can ask. Before you ask any questions, let me make it clear. Few basic things about your net. So जो आप नेट होता है, सबसे पहले तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है. Post graduation is compulsory, and if you are filling the form from your open category, you need 50%. Okay, and if you have any caste or reservation, uskal that you have to check it from the government site. So remember, for open category, 55% in post graduation. And jo bhi subject, whichever subject you had taken in your post graduation, from the same subject you have to do your net. Paper 1 is common, paper 2 depends on your post graduation. Remember, so 55% remember for open category.
for NET exam. And हाँ, one more thing, कि अगर आपने डिस्टेंस से किया है, ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, everything valid. Only that open university or that distance learning जो भी है वो UGC द्वारा recognize होना चाहिए. It should be recognized by University Grant Commission. And remember, UGC is the highest body in India for universities and colleges. So जो भी grants वगैरह मिलते हैं वो UGC देता है. So कोई भी open हो university और state university हो और central university हो, UGC ने रिकॉग्नाइज किया है और आपने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी मोड में, तो आप नेट एग्जाम, अगर आपको 55% मिले हैं तो नेट के लिए अपील कर सकते हैं. और नेट और JRF सेम, सिर्फ somebody ऑडियो इज ऑन प्लीज. अगर आपने नेट और GRF दोनों का सेम है, सिर्फ JRF में आपका एज आ जाता है, दैट इज बिलो 30. अदरवाइज नेट और JRF का सब कुछ सेम है एलिजिबिलिटी. रिमेंबर, सो हो गया डिस्टेंस, ओपन, एनी फॉर्म. आपके जो नेट एग्जाम होंगे, अर्लियर जो आपके नेट एग्जाम होते थे उसमें आप वो सर्कल करते थे OMR शीट्स पे, बट एवरी नाउ अ डेज एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड. सो आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और एग्जाम देते हैं. पेपर 1 और पेपर 2 में कोई भी ब्रेक नहीं होता. सो आप स्टार्ट किए, सो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको खत्म करना है. रिमेंबर, हाँ, आप पेपर 1 दे रहे हैं एंड यू वांट टू गिव, सपोज कि आपको पेपर 2 पहले सॉल्व करना है, सो यू कैन डू दैट एनी टाइम. यू कैन गो ऑन पेपर 1 एंड ऑन पेपर 2. सो रिमेंबर, नाउ इट्स कंप्लीटली ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. So ये few points थे जो नेट के highlights I wanted to share it with you. If you have any questions, you can ask me, or after that you can ask Shushma ji. Okay. Shushma ji, are you there? Yes, sir. So this is over. You can. Sir, I think we should end here. There is no any further questions, ना. और जिसको भी communicate करना होगा further, you can ask me on the given number, okay, for the registration and for enrollment. Sir, you can end the session now. Thank you, Shushma ji. Thank you, everybody. Sir, maybe you can end with 3 Omkar chanting as our yoga rituals. Sure. So let's everybody end it with the Omkar. Close your eyes. Take a deep breath. Take a deep breath. Take a deep breath. Rub your palms. Up your eyes. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, sir.